In the previous video, we have discussed the human neural system, and now in this video, we are going to discuss the another important, that is the neuron. अब ये वर्ड हमें बहुत फैमिलियर है. जब नाम न्यूरल सिस्टम का आता है तो न्यूरल से, एंड क्या न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन फर्स्ट, इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. Second, it's a microscopic structure which contains three parts: cell body, the small projection, that is the dendrites, and the long process, long fibers, that is the axon. जैसे कि किडनी का जब नाम आता है तो हमारे सामने आता है नेफ्रॉन, वैसे ही जब ब्रेन का नाम आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम आता है, तो नाम आता है न्यूरॉन. तो क्या है न्यूरॉन? फर्स्ट पॉइंट, न्यूरॉन. First point is neuron is structural, and functional unit. किसका? Structural and functional unit of neural system. That is first. Second क्या है? न्यूरॉन कैसा है? तो न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. कैसा है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, वेरी शॉर्ट, एंड कंटेन्स, उसके अंदर क्या है? एंड contains three structure. One is cell body. Second one is dendrites, and third one is axon. Made up of three structures or composed of three structures. Contains or composed of three structures. कौन से? नंबर वन सेल बॉडी है, नंबर टू शॉर्ट फाइबर म्हणजे थ्रेड लाइक, उसे कहते हैं डेंड्राइट्स. एंड देयर इज वन अनदर लॉन्ग फाइबर. दूसरा कैसा है? लॉन्ग, एंड उसे क्या कहते हैं? एक्सॉन. So neuron is a microscopic structure composed of three parts. First one is cell body, second one is the short fiber, that is the dendrites, and third one is the long fiber, that is the axon. अब सेल बॉडी में क्या है? तो डायग्राम हम बनाएंगे. डायग्राम बनाने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर फिर से रिपीट होगा, राइट? अब सेल बॉडी में क्या है? तो सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म. सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन न्यूक्लियस. क्या क्या है? देयर इज अ वन न्यूक्लियस, देन देयर इज अ टिपिकल cellular or typical cell organelles, and granular bodies. दूसरा important structure क्या है? That granular bodies, and these granular bodies are called as Nissls granules. Right? So these are the things. सेल बॉडी में क्या है? साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स है, एंड ग्रैन्युलर बॉडीज, दैट इज द निसल्स ग्रैन्यूल्स. अब शॉर्ट फाइबर जो है, शॉर्ट फाइबर में क्या है? शॉर्ट फाइबर आल्सो कॉल्ड द ग्रैन्युलर बॉडीज, एंड दैट ग्रैन्युलर बॉडीज इज सेम निसल्स ग्रैन्यूल्स, राइट? तो वेरी सिंपल. यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे न्यूरॉन. तो क्या कहा? सेल बॉडी है, दिस इज सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर क्या है? तो सेल बॉडी, इसको लेबल करूंगा सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर क्या है? तो नंबर वन न्यूक्लियस. सो एट द सेंटर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वन न्यूक्लियस. इसको लेबल करूंगा न्यूक्लियस. देन दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, एंड देन ग्रैन्युलर बॉडीज. सो यहाँ पर these are the granular bodies. These are the dot-like granular bodies, and that
ग्रैन्युलर बॉडीज को क्या कहा है, दैट इज नीजल्स ग्रैन्यूल्स, नीजल्स ग्रैन्यूल्स। अब जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से निकलते हैं शॉर्ट फाइबर्स। फ्रॉम दिस सेल बॉडीज अराइजेस शॉर्ट फाइबर्स एंड these शॉर्ट फाइबर्स आर रिपीटेडली ब्रांच्ड। यहाँ से कुछ शॉर्ट फाइबर्स निकलते हैं ऐसे, and these are repeatedly branched। These are dendrites। अच्छा, short fibers निकलते हैं, and these are repeatedly branched। and उसे क्या कहते हैं, we call it as these are dendrites। These are dendrites, short fibers। These are dendrites। कैसे है, short fibers। and उसके अंदर भी क्या है, short fibers which arise from the cell body and these are repeatedly branched। at the end these are branching, so the branch, so they are repeatedly branched। and उनके अंदर भी क्या है, उनके अंदर भी there is a presence of granular body, that is Nissal's granules। ग्रैन्युलर बॉडी उनके अंदर भी है, और उसको क्या कहते हैं, नेजल्स ग्रैन्यूल्स। सो नेजल्स ग्रैन्यूल्स कहाँ कहाँ है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, इन द सेल बॉडी एंड इन द डेंड्राइट्स। एंड डेंड्राइट्स क्या है, तो शॉर्ट फाइबर्स व्हिच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। अब डेंड्राइट्स का काम क्या है, डेंड्राइट्स का काम है, फर्स्ट न्यूरॉन का काम क्या है, न्यूरॉन का काम है टू ट्रांसमिट द इंपल्स। ये न्यूरॉन्स होते हैं, दिस 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 ट्रांसमिट द इम्पल्स, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, कहां से कहां, फ्रॉम सीएनएस टू द ऑर्गन्स और ऑर्गन्स टू द सीएनएस। सो ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, तो डेंड्राइट्स ट्रांसमिट द इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ। तो यहां पे लिखूंगा इट ट्रांसमिट, इट ट्रांसमिट इम्पल्स, it transmit impulse towards towards cell body, cell body की तरफ impulse भेजता है, right? So this is the second, dendrites। Now third one is axon। From the cell body arises a long fiber, this is long fiber, यहाँ से दिखाता हूँ मैं, which include the long fiber, and that long fiber is known as axon। उसे क्या कहते हैं, उसे axon कहते हैं। Short fiber is dendroid and long fiber which arise from the cell body is axon। and जो axon होती है at distal end it is repeated और at distal end it is branched। distal end में कैसा है, distal end it show the branching network and at the distal end there is a bag like structure। distal end पे क्या है, there is a bag like structure, such मतलब this is a long fibers which arise from the cell body of the neuron and at the end it show the branching, right? and branching जो है at the end there is a synaptic bag like structure, that is the synaptic knob। this is ये जो है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इट इज साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। साइनेप्टिक नॉब कैसा, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, इट इज अ लॉन्ग फाइबर, लॉन्ग फाइबर arise from the cell body and at distal it is branched and at the distal part there is a bag like structure, that is synaptic knob and उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर there is a one synaptic vesicles। उसके अंदर क्या है, synaptic vesicles and synaptic knob के अंदर synaptic vesicles, synaptic vesicles and synaptic vesicles के अंदर क्या है, तो there is a chemical
called neurotransmitters. उसके अंदर क्या है? Chemicals, and that chemicals is known as neurotransmitters. Neurotransmitters, जैसा कि हमने कहा कि न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे हमने मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल में देखा, कौन सा? एसिटिलकोलिन. सो दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर. सो दिस इज साइनेप्टिक नर्व, साइनेप्टिक वेसिकल्स, एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल्स है, एंड उस केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. दैट इज द केमिकल्स प्रेजेंट इन साइनेप्टिक वेसिकल. केमिकल कहाँ पे? presenting synaptic vesicles, neurotransmitters, right? So this is. अब एक्सॉन क्या करता है? शॉर्ट लॉन्ग फाइबर है, लॉन्ग फाइबर है. एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. डेंड्राइट्स ट्रांसमिट द इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी. एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. तो यहाँ पे एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स away from cell body, away from cell body, right? It transmit the impulse away from cell. अब next क्या है? Depending upon the number of dendroids and axon, right? Dendroids कितने हैं and axon कितने हैं, उनके बेस पर न्यूरॉन इज ऑफ 3 टाइप्स. वो देखिए, considering कौन सा? Considering the 3 things. कौन से? The number of dendrites and number of axon, right? तो उसके पहले ये जो axon है, that axon is enveloped with a Schwann cell. That is, axon is enveloped with the Schwann cell, right? ऐसे Schwann cell से enveloped है, उसे कहते हैं Schwann cell. अब एक्सॉन जो है एक्सॉन जो है न्यूरॉन का, इट इज एनवेलप्ड विद द Schwann cell. एंड अब ये Schwann cell क्या करते हैं? इन सम न्यूरॉन दे डेवलप्ड और दे फॉर्म्ड द शीथ, एंड उसे कहते हैं माइलिन शीथ. दिस इज वन शीथ, दिस इज अनदर शीथ, दिस इज थर्ड शीथ, दिस इज फोर्थ शीथ, लाइक दैट इन द सेम वे. कौन माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है? द Schwann cells. Schwann cell कहाँ है? थ्रू आउट द एक्सॉन, एंड दे डेवलप द शीथ अराउंड द एक्सॉन. उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द माइलिन शीथ, राइट? सो दिस इज माइलिन शीथ. उसको लेबल करेंगे माइलिन शीथ. शीथ मतलब कवरिंग. कौन प्रोड्यूस करता है? The Schwann cells. Schwann cells form the myelin sheath. Schwann cell form the myelin sheath around the axon. उसे कहते हैं myelinated nerve fiber. And कुछ nerve fibers ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर Schwann cell होते हैं, but they do not form the sheath around the axon. and उसे कहते हैं non-myelinated sheath. ये जो myelin sheath है, that myelin sheath is not continuous. It have the spaces. वहां पे क्या है? There are the spaces. This, and उसे कहते हैं nodes of Ranvier. क्या कहते हैं? These myelin sheath around the axon is not continuous. There are the gaps, and the gap between two myelin sheath is known as nodes of Ranvier. So this is the typical structure of neurons. क्या है? टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन. सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, ग्रैन्युलर बॉडी दैट इज बेसल ग्रैन्यूल्स, एंड न्यूक्लियस है, ऑल दैट थिंग्स, एंड टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स. देन सेल बॉडी से अराइज शॉर्ट फाइबर्स व्हिच इज रिपीटेडली ब्रांच. उसके अंदर भी बेसल ग्रैन्यूल्स है. उसका काम क्या है?
to transmit the impulse towards the cell body की तरफ transmit the impulse towards the cell body, and then long process है उसे कहते हैं axon. It transmit the impulse away from the cell body, right? And then एक तो axon है, at the end it is branched, and at the end there is the presence of band like structure, that is synaptic knob. उसके अंदर वेसिकल है, वेसिकल के अंदर केमिकल है, उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट? दैट इज द हार्मोन. देन ये जो लॉन्ग एक्सॉन है उसके ऊपर स्वान सेल है, एंड दिस स्वान सेल फॉर्म द सीट, डेवलप द सीट, उसे कहते हैं माइलिन सीट. दिस माइलिन सीट इज नॉट कंटिन्यूअस, गैप है, and that gap is known as nodes of Van. This is the typical structure of the neuron. अब इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन the number of axon and dendrites, depending or based on number of dendrites and axon, the neurons है, these are classified into the three types. First one is multipolar neuron, second one is bipolar neuron, and third one is unipolar neuron. So कितने टाइप्स है? थ्री टाइप्स. कौन से बेस पे? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेंड्राइट्स कितने हैं एंड एक्सॉन कितने हैं, राइट? सेल बॉडी तो हो गया. तो फर्स्ट इज मल्टीपोलर. देन bipolar, and then unipolar, right? ये देखेंगे कि मल्टीपोलर मतलब क्या है. मल्टीपोलर मतलब द न्यूरॉन्स विथ टू और मोर डेंड्राइट्स, with one axon, right? One axon and two or more dendrites is multipolar neuron. कहाँ होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. एग्जांपल कहाँ है? दे आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. कहाँ पर है? दे आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. Two or more dendrites, only one axon. One axon with two or more dendrites. ऐसा भी आप कह सकते हो. कहाँ है सेरेब्रल कॉर्टेक्स? Then bipolar मतलब one axon and one dendrites. One axon with only one dendrites. इसलिए bi, one axon and one dendrites. Axon only one dendrites. ये नहीं होंगे. So that neuron is bipolar neuron. अब bipolar neuron कहाँ होते हैं? तो bipolar neurons are found in the retina of the eyes. तो एग्जाम्पल कौन सा होगा यहाँ पे? एग्जाम्पल होगा रेटिना ऑफ आईज. वहां पर bipolar neuron होते हैं. That neuron is with only one axon and one dendrites. Then unipolar neuron मतलब कि सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, नो डेंड्राइट्स. क्या होगा? यूनिपोलर मतलब सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, ओनली वन एक्सॉन. सेल बॉडी एंड वन एक्सॉन, नो डेंड्राइट्स. उसे क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज यूनिपोलर न्यूरॉन. अब यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? जिसमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं. डेंड्राइट्स बाद में आते हैं. एंड दीज न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ है? दीज आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. कहाँ पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक development. These unipolar neuron, that is the cell body with only one axon, no dendrites. So this is based on the number of the dendrites and axon. Multipolar cerebral cortex.
bipolar retinopathies, unipolar during embryonic development. So this is the classification of neuron based on dendrites and age. ये होने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ कहा है कि एक्सॉन इज विच स्वान सेल, स्वान सेल का काम क्या है, टू डेवलप और टू फॉर्म द सीड, उसे कहते हैं माइलिन सीड। अब कुछ न्यूरॉन्स में एक्सॉन में स्वान सेल होते हैं बट दे डू नॉट फॉर्म द माइलिन सीड, उसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। So considering the presence or absence of myelin sheath, the next classification, कौन सा next classification? Next classification is myelinated and non-myelinated, considering based on presence or absence of myelin sheath, based on myelin sheath। कितने हैं? दो है। फर्स्ट वन इज myelinated nerve fiber, सेकंड वाला है नॉन माइलिनेटेड nerve fiber, right? depending on the sheath। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर मतलब क्या है कि उसके ऊपर स्वान सेल है, यहां पर भी स्वान सेल है, राइट। दिस स्वान सेल फॉर्म क्या करते हैं, दिस स्वान सेल फॉर्म माइलिन शीथ, माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं एंड इसलिए उनको कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। यहाँ पर स्वान सेल जो होते हैं, दिस स्वान सेल्स डू नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, इसलिए दीज आर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये शीथ नहीं होती है, ये जो मैंने यहाँ पे निकाली है ये नहीं होती, ओनली द स्वान सेल्स, राइट, उसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, राइट। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ होते हैं? एग्जांपल्स, दे आर प्रेजेंट इन, कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन स्पाइनल एंड cranial nerves, spinal and cranial nerves में कौन से nerve fiber होते हैं? myelinated nerve fibers। नॉन माइलिनेटेड nerve fibers कहाँ होते हैं? नॉन माइलिनेटेड nerve fibers are present in somatic and autonomic neural system। So non-myelinated nerve fibers कहाँ होते हैं? These are present in somatic and autonomic neural system, whereas myelinated nerve fibers कहाँ होते हैं? Spinal and cranial nerves। So this is what the another classification of the nerve fibers based on the myelin sheath present है या नहीं। माइलिन शीथ कौन बनाता है? तो स्वान सेल। दूसरी बात ये है कि स्वान सेल जो माइलिन शीथ है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, देयर इज अ गैप and this gap is known as nodes of Ranvier, right? So this is the neuron, microscopic structural and functional unit of neural system, right? Cell body, dendrites, axon, bipolar, multipolar, bipolar, unipolar, based on the number of dendrites and axon. Myelinated nerve fiber, non-myelinated nerve fiber, based on the presence and absence of myelin sheath. With this, we have completed neuron. In the next video, we'll discuss the conduction of nerve impulse.